Mom, Mary had a little lamb. Okay. Manipulation of gene involves the repairing of defective genes. So repairing of defective genes means defective genes are removed and replaced by healthy gene, or replacing defective genes by healthy genes or normal genes, artificially synthesizing of totally new gene. Okay, so red eye color, it is not there. Okay, so we'll synthesize it. Yellow eye color, it is not there. So we'll synthesize the gene. I'm giving example, don't think or imagine. Transfer of genes into new location or into new organism. Okay, so naturally the gene which doesn't exist in microorganism, we are introducing that gene. Okay, introducing an altogether new gene. Manipulation of genes for improvement of living organism. For example, you want disease resistant variety of crop plant. Okay, so the disease resistant gene which is not there in this plant but it is there in some other variety or maybe some other species, वहां से वो जीन को एक्सट्रैक्ट करो और राइस के प्लांट में डाल दो, या फिर राइस का जीन है उसको पकड़ के पपाया के प्लांट में डाल दो. ओके, या फिर पपाया का जीन पुट इट इन रोज प्लांट. ओके, सो ऑल दिस इज पॉसिबल. Combining of genes from two organisms, altering the genotype, gene cloning, etc. What is gene cloning? Gene cloning means copying. Clones means copying. Okay. Therefore, genetic engineering is alternatively called as recombinant DNA technology or gene cloning or simply RDT. Okay, RDT, capital RDT is recombinant DNA technology. Any doubt? हे लाईक एवढा ॲडव्हान्स्ड तर ते लोकांना डाऊन सिंड्रोम आहे त्यांना ट्रीट करायला. Down syndrome is what? One the 21st chromosome extra in each and every cell. तो प्रत्येक सेल मधला 21st chromosome कसा काढणार? नाही जीनच अल्टर करून इंजेक्ट केलं. म्हणजे दॅट इज पॉसिबल की एखाद्या फॅमिलीमध्ये इफ देर आर मेनी डाऊन सिंड्रोमचे आहे पेडिग्री. ओके, सो दोघांचे काय म्हणूयात आपण काय गॅमेट्स, हा त्या गॅमेट्स मध्ये ते करायला लागेल की ह्या गॅमेट मध्ये आधी बघायचं की एक्स्ट्रा जीन आहे का, जर असेल एक्स्ट्रा जीन तो काढून टाकायचा. ओके, मग दुसऱ्या गॅमेट मध्ये चेक करायचा अँड देन अलाउ दीज गॅमेट्स टू फ्यूज, देयर विल नॉट बी डाऊन सिंड्रोम. ओके, सो तसं करता येऊ शकतं. बट पर्सन हु ऑलरेडी हॅज डाऊन सिंड्रोम, हाऊ विल यू रिमूव्ह 21st chromosome from each and every cell? Okay, so in gene therapy there are two types: somatic gene therapy, okay, and gamete gene therapy. In somatic gene therapy, for example, there is some genetic alternation in cell, let's say pancreas. Okay, insulin nahi bana. Okay, so only in pancreatic cells that genetic combination can be done. Okay, so उसका फायदा उस organism को होगा. That particular person, the defective gene is removed and replaced by healthy gene. Okay, but in its gamete there will be defective gene only. So in next generation he will pass defective gene only. In somatic gene therapy, the person who has that defect, उसको हमने treat किया, the benefit will be for that person. Okay, but in gametic gene therapy, next all generations you are preventing from that gene. Okay, so तू म्हणतेस तसं करता येऊ शकतं, but in Down syndrome all cells are defective, so we have to remove gene from each and every cell, which is not possible. Okay, but if you know that there is a heredity of a particular, then at gametic level you can alter, then allow those gametes to fuse. Now see, it is so difficult that gamete में पहले तो देखो कि gene extra है क्या. Okay, for that you have to take मतलब फोटो निकाल के देखना पड़ेगा. Okay, so उसमें से exactly gene निकालना है, and the gamete should survive in all these two processes. The gamete should survive. Okay, फिर दूसरा gamete उसको fuse करो, that should survive. Then zygote should be produced, that should survive. Then you will allow that zygote to become morula. Then it will be implanted. Then in all this, at every step there is chance that it will die. Okay, so all these processes theoretically yes, हे कट करून तिकडे चिकटवूया. Practically हा आपल्याला चार कागदाचे तुकडे जरी दिले ना आणि सांगितलं H2H छान मॅच करून चिकटावा तरी जमणार नाही. हा, but practically it's so easy. Theoretically it's so easy की हे असं असं कट पेस्ट करायचं. Okay, so याचा प्रॅक्टिकल अप्रोच जो आहे दॅट इज रिअली. ओके, पण हा विचार तर करू शकतो आपण या डायरेक्शन मध्ये. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे याच्यामध्ये यू हॅव टू फॉलो द प्रोसेस, यू हॅव टू फॉलो वॉट एव्हर द
duration for which you have to incubate it or heat or whatever. Okay, and chemicals you have to take in exact quantity. Okay, otherwise there is no skill. ओके, बाकी जर तुम्ही म्हणाल की टिश्यू कल्चर किंवा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, एम्ब्रियो कल्चर, ऑल दैट इज स्किलफुल। ओके, उसके हाथ में आर्ट होना जरूरी है, बट यहाँ पे डजेंट मैटर, बिकॉज फॉर कैलकुलेटिव एग्जैक्ट जितने प्रोपोर्शन में आपको केमिकल्स लेने हैं, यू हैव माइक्रो पाइपेट्स रेडी फॉर इट। ओके, सो दे आर लाइक पेन। ओके, सो दे आर कैलिब्रेटेड। पेन को आप जैसे क्लिक करते हो, ओके, वैसे ही माइक्रो पाइपेट को क्लिक करो, यू विल गेट 5 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर एग्जैक्ट केमिकल। ओके, सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी इसमें ना, टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगती है। ओके, कि आपको कुछ जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, स्टेराइल कंडीशंस चाहिए, उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। बट व्हाट यू आर डूइंग विद सेल, what bio processes you are manipulating, that is the biological aspect। okay, so this is biotechnology। okay, uh, techniques of gene cloning and recombinant DNA technology। In gene cloning, a gene of known function can be transferred from its normal location into a cell via a suitable vector। What are vectors? Imagine करके। Okay, what are vectors? You have studied vectors in health and diseases। Okay? नाही नाही कॅन्सल कॅन्सल मला वाटलंच तुला ते Physics and maths मधला vectors नको आहे, scalars and okay, vectors are something which someone who transfers, like mosquitoes, they are vectors of various diseases। Here we want vector which will carry gene from one organism to other। okay, we said that we will introduce human insulin ka gene in E. coli। okay, but who will carry that gene? How to introduce that gene in cell? okay, you cannot inject it in cell, right? Nowadays that is also possible, injecting gene। okay, but better कि naturally अगर कोई यहाँ से वहाँ पे gene लेके जाने वाला है, तो that will be better। so they are called as vectors। for example, viruses naturally infect bacteria। they introduce their DNA inside bacteria। that DNA fuses with bacterial genome। so वो virus पे ही आपके interest का gene चिपका दो। that virus will carry gene inside bacteria। it will carry gene and fuse that with the bacterial genome। so these organisms are called as vectors, and plasmids are also used as vectors। मध्ये जीनोम इन्फेक्ट नाही होणार व्हायरस व्हायरसचा जीनोम, आपल्याला व्हायरसमध्ये इंटरेस्ट नाहीच आहे ना। वन्स द व्हायरस एंटर्स इन बॅक्टेरिया, इट्स डीएनए फ्युजेस विथ बॅक्टेरियल डीएनए, दॅट इज व्हॉट वी वॉन्ट। अच्छा म्हणजे ते नॉन इन्फेक्शियस व्हायरस हा, आता त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हायरसचा इन्फेक्शियस पार्ट जो आहे, दैट वी हैव टू रिमूव। ओके, सो इतना इजी नहीं है कि यहाँ का जीन वायरस को दिया और वायरस ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं है। एज शी सेड राइटली कि वायरस नेचुरली क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल कर देगा। देन नो पॉइंट इन इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट थ्रू वायरस। सो वायरस का जो वायरुलेंट एंटिटी है, हाँ, जो डिसीज कॉज करने वाला या फिर जो अनवांटेड पार्ट जो है, दैट इज रिमूव। ओके, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट। सो बेचारे वायरस को भी पता नहीं है अपने साथ क्या क्या हो रहा है। ओके, व्हाट इट इज कैरिंग। ओके, बैक्टीरिया को भी पता नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन। but it may happen that in some bacteria the virus carrying unwanted gene may not be allowed to enter also। okay, so इसका 100% result नहीं है। okay, so you should have many viruses, many bacteria, they should combine। so maybe 5-10% bacteria will allow that virus to come in and stay that gene inside the bacteria, rest may not allow also। ओके, सो एक वायरस एक बैक्टीरिया लेके काम नहीं करना है। स्टैटिस्टिकली यू शुड हैव लार्ज प्रोपोर्शन, और हमें आइडेंटिफाई भी करना है कि विच बैक्टीरिया हैज टेकन जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट एंड दैट जीन इज स्टिल सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग एंड व्हाटएवर वी वांट इज गोइंग ऑन इनसाइड दैट सेल। ओके, सो उसका सिलेक्शन कैसे करना है? अगेन वी कैनॉट सी बैक्टीरिया। ओके, उनको देख के पता चलना चाहिए कि whether gene of our interest has gone or not। ओके, सो उसके लिए भी हमें मार्कर जीन्स भी लगते हैं। ओके, सो पहले समझाए व्हाट इज वेक्टर। ओके, वेक्टर्स के सारे डिटेल्स हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो वेक्टर हैज टू बी देयर। The transferred gene is replicated normally and is
handed over to the next progeny. So gene of our interest is passed inside cell through vector, फिर वो वेक्टर के साथ अंदर जाएगा, it will remain in the DNA and वो उसके अंदर it should replicate and it should be passed on to the next generation. Okay, so क्या क्या करना है देखो, this is host cell and this is probably gene of our interest. Okay, let's mark it with blue color. Okay, this is a gene of our interest. ये जीन हमें डालना है बैक्टीरिया में, ठीक है. दिस इज बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. अब हमें ये होस्ट सेल का डीएनए जो है, दैट डीएनए वी शुड टेक आउट, पहले तो उसको बाहर निकाल. ओके, दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ओके, फिर ये आइसोलेटेड डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के. वन ऑफ द फ्रैगमेंट विल बी ब्लू जीन. ओके, फिर उसमें से एग्जैक्टली ये ब्लू जीन जो है उसको आइसोलेट करो. ओके, so first step is isolation of DNA, second step is fragmentation of DNA, third step is pick out fragment of our interest and put that fragment in vector. ओके, सो हा जो वेक्टर आहे त्या वेक्टरच्या डीएनए बरोबर आपण आपल्या इंटरेस्ट फ्रॅगमेंट टाकून दिली. नाउ दिस वेक्टर विल गो इनसाइड बॅक्टेरियल सेल along with gene of our interest. Okay, and vector naturally what does, this vector fuses its own DNA with bacterial cell. So ये bacterial के cell के साथ अपना DNA को fuse करेगा along with gene of our interest. Okay, these are the steps involved. Okay, अब हर एक step में हमें देखना है कि how isolation of DNA is done, how screening of fragments is done. Screening means आपल्याला शोधून काढायचं है which fragment contains gene of our interest. Okay, so उसका screening करना है, उसको vector में डाल देना है and then allow vector to infect the other cell. Okay. So या सगळ्या roughly steps आहेत, ठीक है. And hand over to next progeny. मतलब ये bacterium, whenever this bacterium will divide and produce daughter cells, all daughter cells will carry gene of our interest. Okay, so naturally it is getting amplified. Okay, amplification is what, increase in number, right? So यहाँ पे एक ही था हमारे interest का gene. When this cell will become two daughter cell, we are getting two copies of our gene. Okay, दो का चार, whatever number it will keep on growing, we are getting so many copies of gene of our interest. Okay, that is called as amplification of gene. Okay, tools and techniques for gene cloning and recombinant DNA technology. Okay, before we venture into procedure of gene cloning, let us know briefly the basic requirements of the technique. Different instruments, macromolecules such as DNA, RNA, protein, etc. are synthesized in living cell which vary in their molecular weight, solubility, presence of charges, absorbance of light, etc. Are you getting this? Okay, इसमें क्या है देखो. Macromolecule means major natural molecules present in all cells. Okay, size of DNA is different from species to species. Okay, types of RNA produced are different. Types of enzymes or proteins required, they are different. Okay, in their molecular weight, so obviously उनका length different है. All the proteins or enzymes have different solubility. They have different charges present on in. We know that DNA is negatively charged, right? Some amino acids are acidic, some are basic, some are neutral. Okay, so they all have different chemical nature. Okay, and accordingly all proteins, resulted proteins also have different chemical nature. Okay, and absorbance of light. Absorbance of light means when they are present in the form of insoluble small particles in water and light when passes through it, some light rays get absorbed and some are reflected, some are refracted,
Okay, so accordingly, we can exactly analyze what type of chemical is present in that water. Okay, that is called as spectroscopy. That is advanced technique. Okay, वो जो विक्रम लैंडर है ना, okay, that लैंडर और रोवर जो है उसके साथ we have that spectroscope attached. Okay, so वहीं पे वो chemical sample का analysis करके data हमें भेज रहा है. Okay, so spectroscopy is based on the absorbance of light. Okay, several techniques are used to isolate and characterize the macromolecules. Okay, so बहुत सारे techniques हैं जिससे we can isolate DNA, we can isolate RNA, we can isolate enzymes. Okay, and characterize means we have to study them, purify them. Okay, ऐसा नहीं है ना कि हमने DNA extract किया मगर उसके साथ थोड़ा और भी कचरा आया है. ओके, आरएनए एक्सट्रैक्ट किया है मगर उसके साथ थोड़े से प्रोटीन्स भी है. प्रोटीन हमने एक एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है मगर उसके साथ और भी दो चार प्रोटीन्स है, ऐसा नहीं है. ओके, वी वांट प्युरिफाइड प्रोडक्ट विदाउट एनी काय म्हणतात इम्प्युरिटीज. ओके, सो त्याचा स्टडी जर केला तर त्याला म्हणणार आपण कॅरेक्टरायझेशन. व्हॉट वी हॅव एक्सट्रॅक्टेड दॅट इज प्युरिफाइड अँड अनालाइज, दॅट इज कॉल्ड एज कॅरेक्टरायझेशन. The size of different types of molecules varies and therefore their molecular weights also vary. The techniques used on the basis of molecular weight are gel permeation. Okay, so gel, agar gel. Okay, उस gel में how molecules imbibe, how they spread, how they separate. That is called as gel permeation. You are not going to study that. Osmotic pressure, that is salt water concentration. Ion exchange chromatography, that is separation of different ions. Okay, it is analytical and separation technique commonly used in chemistry. Spectroscopy, as I said, it is based on absorption and how light spectrum passes through chemical, that is spectroscopy. Mass spectroscopy, its advanced version. Electrophoresis, electrophoresis we will study, gel electrophoresis. हाँ, तुम्हाला दाखवला मी व्हिडिओ. व्हिडिओ व्हिडिओ नाही आपण केलं. मॉलिक्युलरच्या लास्ट चॅप्टर नाही, त्याच्यापेक्षा डिटेल्ड आपण करू. मी तुम्हाला एक छानसा व्हिडिओ पण दाखवेल त्याचा. ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो बेसिकली हम जेल बनाएंगे एगारोस का विच इज नेचुरली न्यूट्रल. ओके, उस पे वी विल लोड दीज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. Okay, DNA is negatively charged, so it will move towards positive anode. Okay, and while moving and passing through gel, obviously large fragments will take more time to pass through gel and smaller fragments will pass quickly because they have to pass through gel. Okay, so imagine these gel molecules are like obstacles and small spaces which are present between the molecules. Through these spaces, these fragments have to pass. So they'll get entangled around molecules, they may not get chance to move, but smaller molecules can run between these molecular intermolecular spaces. Okay, so smaller fragments will move quickly, then say largest. Okay, so this is how gel is used for separation of fragments on the basis of their length and molecular weight, of course. Okay, so that is called as gel electrophoresis. It is applied for separation of DNA, RNA and proteins. So gel electrophoresis is applied for separation of DNA fragments, RNA fragments as well as proteins. Okay, DNA being negatively charged migrates to anode. Some fragments of DNA molecules move faster and thus separate faster. Using agar gel electrophoresis, page, SDA page and different methods of electrophoresis are done. So उसमें भी 2D electrophoresis है, 3D electrophoresis है, बहुत सारे methods हैं. This page and SDA page you are not going to study in 12th. Okay, that you will study in higher standards. Okay, so important and interesting part is polymerase chain reaction. Okay, इतना part करके let's see. अगर आपका पेशेंस है तो वी विल स्टडी फर्दर. हाँ नाही, अख्खं पीसीआर करायचं आहे, पूर्ण नेक्स्ट पेज पर्यंत आहे पीसीआर. अच्छा. Okay, so let's understand what is PCR. Okay, in forensics you all must have seen कि they collect small samples of DNA. Okay, maybe a hair follicle or small blood samples. Okay, RBCs are devoid of DNA now. Okay, so RBCs में न्यूक्लिया है नहीं. So whatever chemical or small blood samples they are getting, उसमें से WBCs का DNA they extract. Okay, and इतना छोटा sample लेके how much DNA they will get, and they have to compare this DNA with all suspects. ओके, उसका एनालिसिस करना है किसका डीएनए, कौन सस्पेक्ट्स हैं, स्त्री वाला आया था, ड्राइवर आया था, बॉयफ्रेंड आया
किसका डीएनए है, हाँ दैट दे हैव टू एनालाइज इट। ओके, फिर ये डीएनए किसके साथ मैच हो रहा है, किसके पेरेंट्स का बेटे का है या किसी और का है या कबूतर का ब्लड है, एवरीथिंग दे हैव टू स्टडी विथ। ओके, सो इतना स्मॉल डीएनए सैंपल जो है उसका इतना सब एनालिसिस कैसे करेंगे? सो ऑब्वियसली दैट डीएनए सैंपल शुड बी इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, मगर इस डीएनए को लार्ज क्वांटिटी कैसे करेंगे? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन डीएनए फ्रॉम डेड सेल। ओके, सो डेड सेल का डीएनए निकाल लो, ओके okay, और उसको लार्ज क्वांटिटी में एम्पलीफाई करना है, तो इट कैन बी कैरिड आउट इन टेस्ट ट्यूब आल्सो, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इन विट्रो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, इन विट्रो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, सो एक एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट और इस जीन के हमें बहुत सारे कॉपीज चाहिए। ओके, सो इसके कॉपीज करने के लिए अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए बोलो? ऑल द कंडीशंस वी विल रिक्वायर इन विट्रो, इन विट्रो। सो रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज केमिकल चाहिए, ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, प्राइमर चाहिए, डू रिमेम्बर? Yes. ओके, सो प्राइमर्स चाहिए हमें, डीएनए शुड बी इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। हाँ हाँ, मगर हमारा ये फ्रैगमेंट छोटा है, इट इज नॉट हेलिकल। ओके, सो हमने फ्रैगमेंट का टुकड़ा लिया है, बट दिस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो उसको पहले सिंगल स्ट्रैंडेड बनाओ, उसको प्राइमर्स अटैच करो 3 प्राइम एंड पे, फिर हमें पॉलीमरेज चाहिए कि जो एग्जैक्टली टेम्पलेट पे न्यू डीएनए फ्रैगमेंट बनाएगा। ओके, सो और डीएनए बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ओके, एटीपी, दैट इज ऑफ डीएनए। ओके, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ओके, सो लेट्स एम्पलीफाई अ स्मॉल जीन। ओके, all this is done in vitro in sterile medium conditions। ओके, और इसके लिए हमें चाहिए ऐसा डीएनए पॉलीमरेज व्हिच विल सस्टेन हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये सारे केमिकल रिएक्शंस में वी विल रेज टेम्परेचर अप टू 95 डिग्री सेल्सियस, अप टू 72 डिग्री सेल्सियस, इन बिटवीन 55 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें टेम्परेचर का साइक्लिंग है। Okay, once you are increasing temperature, then you are decreasing temperature, again you are slightly increasing temperature, इसके इससे एक cycle complete होगा। Okay, and after one cycle you are again repeating these cycles। Are you getting it? So first cycle में हमने क्या किया? temperature increase किया, decrease किया, थोड़ा increase किया, complete one cycle, again start with 95, 55, 72, again starts with 95, and you know that most of the proteins it get denatured at high temperature, and we are talking about DNA polymerase which should survive and sustain at this temperature। Okay, so हमें ऐसे DNA polymerase चाहिए कि जो high temperature में भी it will function as enzyme and it will carry out